Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 13 for the subject of operating systems. In the previous lectures, we discussed the need of process scheduling. We also discussed different scheduling algorithms, including the first come first served, the shortest job first, the shortest remaining time first algorithms. Now each algorithm had a different mechanism of working, but the main objective of each algorithm was to ensure that the utilization of CPU is maximized while the average waiting time and average turnaround time of the system are reduced. In this lecture, we are going to discuss another algorithm that ensures the fairness or job fairness for the process set. In this lecture, I am going to discuss the RR scheduling algorithm. We will also discuss the concept of the time quantum and its types. We will also solve some examples of the round robin scheduling algorithm, and at the end we will see the relationship between the time quantum and context switches. Now, what is RR scheduling? RR scheduling stands for round robin scheduling. Now, this scheduling is devised for the time sharing systems or the interactive systems. In round robin scheduling, each process gets a small unit of CPU time, and this time is known as the time quantum. Now, the value of time quantum can depend upon the system, but it usually varies from 10 to 100 units. You can vary it from 10 seconds to 100 seconds or 10 milliseconds to 100 milliseconds. This is known as time quantum. In some literature, it is also known as the time slice. Now, what happens? A process is selected by the scheduler and the CPU is allocated to it for execution. Now, CPU is handed over to the process for a time equal to the time quantum. After the expiration of time quantum, the process is preempted and added to the end of the queue, and the next process from the queue is selected and given the opportunity of execution. आप कह सकते हैं कि राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम जो है वो प्रिमिटिव है. इसमें क्या होता है कि चाहे आपका प्रोसेस लॉन्ग है चाहे प्रोसेस शॉर्ट है, उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता. इसके अलावा एक्चुअली होता क्या है कि आप एक टाइम क्वांटम डिफाइन कर देते हैं. जो CPU स्केजुलर है वो रेडी क्यू के फ्रंट पे जो प्रोसेस होता है उसको पिक करता है और CPU को डिस्पैच कर देता है. अब CPU इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा कितने टाइम के लिए? टाइम क्वांटम के लिए. जब तक टाइम क्वांटम एक्सपायर नहीं होगा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा CPU को डी एलोकेट कर दिया जाएगा, यानी उस प्रोसेस को प्रीम्प्ट करेंगे और क्यू के एंड पे ऐड कर देंगे और क्यू के फ्रंट पे जो प्रोसेस होगा उसको पिक कर लेंगे. इसके लिए हमें एक टाइमर रिक्वायर होगा. द टाइमर विल इंटरप्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम क्वांटम. नाउ व्हाट आर द परफॉर्मेंस इफेक्ट्स ऑफ द टाइम क्वांटम? इफ द टाइम क्वांटम इज लार्ज, your scheduling will eventually become same as the first come first served. If your time quantum is small, it will give rise to too many context switches. Now, whenever a context switch occurs, the process control block of one process is saved and the process control block of another process is
loaded. So it involves a certain amount of time. So it will contain, so it will create some overhead for the CPU and the operating system as well. So our aim is to optimize the value of the time quantum. Now time quantum has two types. One is the static time quantum, as the second one is the dynamic time quantum. The static time quantum is a fixed value. It can be defined by the system or user defined, and the value remains same for all the set of processes. But the dynamic time quantum changes over time. It is neither defined by the system nor defined by the user. Instead, we will use some sort of mathematical formula or statistical formula to calculate the time quantum value. Now it involves different overheads, and it is actually complex because you need to use a different number of formulas in calculating the time quantum. However, dynamic time quantum can reduce the overall waiting time and turnaround time, and it can be for different set of processes. Now let us look at the example of the round robin scheduling. In this round robin scheduling, we have three processes, P1, P2 and P3. All processes have arrived at the same time. Now let us create the Gantt chart for this process. Now this is the first example, example 1, round robin. We have three processes, P1, P2, P3. All these processes have arrival time 0, 0, 0, 0. Now the bus time is 24, 23, 23. यहाँ पर मैं दो कॉलम्स क्रिएट कर देता हूँ, फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम के लिए. हमारे पास टाइम क्वांटम की क्या वैल्यू, टाइम क्वांटम की वैल्यू 4 है. सो इट मीन्स वी हैव अ स्टैटिक टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 4 यूनिट्स ऑफ टाइम. सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रेडी क्यू? First of all, we will have ready queue at time is equal to 0. At time is equal to 0, we will have three processes in the memory. One process is P1, requiring 24 units of time. The second process we will have is process P2. Now process P2 will require 3 seconds. Next we will have process P3. Process P3 will also require 3 seconds of time. Now this is the front end of the queue and this is the rear end of the queue. So the CPU scheduler will pick the process from the front end of the queue. Now CPU scheduler will pick the process P1 and will execute process P1 for amount of time equal to time quantum. यानी CPU scheduler फ्रंट पे जो प्रोसेस है उसको पिक करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा. आप कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा? क्योंकि हमारे पास टाइम क्वांटम 4 है. सो बेसिकली P1 को 4 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करेगा. अब 4 सेकंड्स एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा? जैसे ही 4 सेकंड्स गुजर जाएंगे हम प्रोसेस P1 को प्रिम्प्ट करेंगे और क्यू के रियर पे ऐड कर देंगे. सो एट टाइम इज इक्वल टू 4 आवर रेडी क्यू विल लुक लाइक दिस. The first process in the ready queue will be process P2 because
We have already removed the process P1 from the front end, and we are going to add this process at the rear end of the queue. So the first process will be process P2. First process will be P2 with 3 seconds. The second process in the ready queue will be process P3 sorry, with 3 seconds, and the third process will be process P1, and the remaining time for the process P1 will be 20 seconds because it has already passed 4 seconds under execution. Now the CPU scheduler will pick the process P2 and start its execution. Now for how much time the process P2 will be executed? Our time quantum value is 4. The burst time for process P2 is 3. So it means that the operating system can comfortably complete the process P2. So process P2 will be executed for 3 units of time. After 3 units of time, we will have the timeline at 7 seconds, and with process P2 has completed its execution. Now at time is equal to 7 seconds because the system timeline is at 7 seconds. Our ready queue will contain 2 processes. The first process will be the process P3, and the second process will be process P1. Now what will happen? Again the CPU scheduler will select the process from the front end of the queue. Now the process is P3. So process P3 will be selected, and for how much time the process P3 will be executed. अब हमारे पास जो प्रोसेस P3 है उसको 3 सेकेंड्स रिक्वायर है. हमारे पास जो टाइम क्वांटम की वैल्यू है वो 4 सेकेंड्स है. तो इट मीन्स कि हम P3 की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं. सो CPU scheduler will pick the process P3 and will execute it for 3 units of time. This will make the timeline to reach 10 seconds. So after 10 seconds, the process P3 has also finished the execution. So at time is equal to 10 seconds, we have only a single process in the ready queue, and the process is P1. Now this is the process P1 in the ready queue with time is equal to 20 seconds. Now what will the scheduler do? Scheduler will again pick the process P1 and execute it for 4 seconds. Now process P1 is picked by the scheduler and executed for 4 seconds, and this makes the timeline reach 14 seconds. Now again we will have to change the ready queue. So at time is equal to 14 units. At time is equal to 14 units, the burst time or the remaining burst time for the process P1 will be 16 seconds. Now again the CPU will pick the process from the front end of the queue, that is P1, and will execute it for another 4 seconds. Now process P1 will be picked and executed for
4 units. This will make the timeline to reach 18 seconds. Now our overall timeline has reached 18 seconds, and the remaining burst time for the process P1 will be 12 seconds. Now again, no new process is added to the ready queue. So the scheduler will again pick the process P1 and will execute it for 4 units of time. This will make it to reach 22. At 22 seconds, now again we will have to change the ready queue. So at 22 seconds, our ready queue situation will be like this. The remaining burst time for the process P1 will be 8 seconds. Now again scheduler जो है वो प्रोसेस P1 को पिक करेगा और इस P1 प्रोसेस को 4 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करेगा. तो हमारा टाइम जो है वो कहाँ पर रीच करेगा, 26 सेकंड्स तक रीच करेगा और हमारी रेडी क्यू की सिचुएशन दोबारा चेंज हो जाएगी. सो एट 26 सेकंड्स आवर रेडी क्यू will still contain a process that is P1 जिसका remaining time जो है वो 4 seconds होगा. अब एक्चुअली क्या होगा, दोबारा से फिर स्केजुलर इसको पिक करेगा और प्रोसेस P1 को 4 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करेगा और ये 30 सेकंड्स पर टाइमलाइन पहुंच जाएगी. और जैसे ही 30 सेकंड्स पास हो जाएंगे हमारे पास रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस नहीं रहेगा क्योंकि प्रोसेस P1 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम भी 0 हो चुका होगा. सो यहाँ पर जो है वो हमारे प्रोसेस सेट की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गई और प्रोसेस सेट हमने एग्जीक्यूट कर लिया. रेडी क्यू में कोई प्रोसेस नहीं रह गया. अब नेक्स्ट स्टेप जो है हम इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे. नाउ व्हाट इज़ द फिनिश टाइम फॉर प्रोसेस P1? प्रोसेस P1 फिनिश द एग्जीक्यूशन एट टाइम 30. सो द फिनिश टाइम फॉर द प्रोसेस P1 इज़ 30 seconds. Now what is the finish time for process P2? Process P2 has finished the execution at 7 seconds. So the finish time for the process P2 is 7 seconds. Now what is the finish time for process P3? Process P3 finished the execution at 10 seconds. So the finish time for the process P3 is 10 seconds. Now what is the waiting time? As we all know, the formula of waiting time is equal to finish time minus burst time plus arrival time. Now finish time of process P1 is 30, burst time of process P1 is 24 plus arrival time is 0. So process P1 waited for a total of 6 seconds. And this phenomena is clearly visible here. 10 minus 4 is equal to 6. नेक्स्ट हमारे पास आता है P2 का फिनिश टाइम, वेटिंग टाइम. P2 का फिनिश टाइम क्या है? 7 सेकेंड्स. P2 का बस टाइम क्या है? 3 सेकेंड्स और उसका अराइवल टाइम क्या है? 0. सो 7 minus 3 is equal to 4. सो ये बेसिकली P2 का वेटिंग टाइम है. नाउ व्हाट इज़ द वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P3? P3 हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन एट 10. द बर्स्ट टाइम फॉर द प्रोसेस P3 is 3 and the arrival time is 0, which makes it 10 minus 3 is equal to
7. So this is the waiting time of these processes. Now what is the average waiting time? Average waiting time is equal to 6 plus 4 plus 7 is equal to, divided by 3 is equal to 17 divided by 3. Now 17 divided by 3 is equal to 5.67 units. So this is the average waiting time for the process set. Now here is a comparison between the time quantum and the context switches. If we have a larger time quantum, we will require less number of context switches. If we have a very small time quantum, we will have a lot of context switches. जैसे हमारे पास ये जो एग्जांपल है, अगर यहाँ पर टाइम क्वांटम 4 है तो हमारे पास टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विच कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. अगर हमारे पास टाइम क्वांटम 10 हो जाता तो ये नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस जो है ये रिड्यूस हो जाते, लेकिन ये फिर ट्रेडिशनल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग की तरफ मूव कर जाता. Now here is another example of round robin scheduling algorithm. यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3. हर एक की ड्यूरेशन आपको गिवन है, ये ड्यूरेशन बस टाइम है. फिर हमारे पास इनकी ऑर्डरिंग है कि हमने पहला प्रोसेस कौन सा रखना है, सेकंड कौन सा रखना है, थर्ड कौन सा रखना है, क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 है. सो इससे ये गैंट चार्ट किस तरह से बना, इसको आपने सॉल्व करके देखना है और टाइम क्वांटम को आपने 1 यूनिट कंसिडर करना है. सिंपली आप इसको सॉल्व करके देखें, इसकी ऑर्डरिंग को चेंज करके देखें, फिर देखें एवरेज वेटिंग टाइम पर इसका कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है. सो दिस इज़ बेसिकली योर असाइनमेंट.